Do you see the screen now? Yeah, I see it. We'll do the question जल्दी से. I know कि class का time खत्म हो गया. And okay. फर्स्ट में उसने पूछा हुआ कि डिफाइन रेडियन. हम रेडियन की एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हुए हैं. सेकंड पार्ट में उसने बोला है एंगुलर स्पीड को डिफाइन करें. एंगुलर स्पीड हमारे पास किसके इक्वल होती है? Is uh theta over t. Yeah, but how would you define it? Rate of change of angular displacement. You Two know this marks? na? You know this na कि whenever we use the term rate, that means कि that quantity is being divided by time. We do Yeah, not I have know. to write the time again. Yeah. You were saying something before? Yeah, is it yeah 2 marks earlier? Yeah. So we have to write the formula as well. It was change the angular displacement by the string given as omega is equals to theta or delta theta over delta t. नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? The maximum frictional force is, sorry, I'll show you the whole question. I'll read my version only. Okay. Maximum number of revolution of the plate per minute. Revolutions per minute का मतलब है हमें angular velocity calculate करनी है. Because revolution per minute is also a unit for angular velocity. Radians per second, revolutions per minute, ये velocity के ही units हैं. Should we proceed? Yeah. Okay. सबसे पहले हमारे पास equation is given as F is equals to 0.72 W, where W is the weight. So F की जगह पे हम लोग लिख देंगे mr omega square equals to 0.72 mass into gravity. mm से cancel out हो जाएगा. हमें omega find out करना है. So that would be equals to 0.72 g over r whole square. We have the value g. r की वैल्यू उसने दी हुई है क्वेश्चन में कहीं पे भी? 35 दी हुई है. Centimeter है, so that would be 35 into 10⁻². Calculate the answer. 4.5. Equals to 4. क्या हो गया इसको?
ओके 4.5 रेडियंस पर सेकेंड, ये ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, उससे हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैलकुलेट करने को बोले थे। वी नो दैट कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ ऑल्सो। दिस वुड बी इक्वल्स टू 4.9। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी इक्वल होती है? हाउ डू वी डिफाइन फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, राइट? Yeah. So we can write it as n over t. Do you get this portion? Why I Yeah, write I get it. n over t instead of frequency? It's number of Yeah. oscillations per second. 4.9 and I need this n. So उसने per minute का हमें already बताया हुआ था, revolution per minute, which means this would be equals to 60 seconds. Okay, So yeah. n is equals to 4.49 times 60 over 2 pi. Here, keep this in mind. 4.49 रेडियंस पर सेकेंड था, into 60 सेकेंड, सेकेंड से कैंसिल आउट होगा, विल बी लेफ्ट विद रेडियन, एंड रेडियन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, विच मींस हमारे पास यहाँ पे n जो कि नंबर होता है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। सो दैट वुड बी जस्टिफाइड कि हमने इक्वेशन प्रॉपर्ली यूज किया है इसको। रिपीट करना है। मैं यूनिट्स सेकंड्स। फॉर्म कर रहा था कि n के यूनिट्स, n एज अ नंबर ना, सो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होना था। ठीक है, सो तो मैंने इसको जस्टिफाई किया कि 4.49 रेडियंस पर सेकंड था, और ये पे 60 जो था वो हमारे पास क्या था, सेकंड था, तो सेकंड सेकंड से कैंसिल आउट हो गया, विल बी लेफ्ट विद रेडियन ओनली, एंड रेडियन इज नॉट अ यूनिट टू बी कंसिडर्ड। सो इवेंचुअली एन का भी कोई यूनिट कंसिडर नहीं होगा। ओके, सही। आंसर इज 43। 43। ओके, अब मार्किंग की मैंने नहीं अभी ओपन की, देख लेंगे उसमें 43 है या क्या है। One- ठीक है, जी। अब आज मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए ना, डे और टू आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व। ओके, दैट्स फाइन। अल्लाह हाफिज। हाफिज। As well. Okay. So first of all, we have to define radian. Radian in terms of SI unit, अगर हम उसको define करें, it will be basically angle subtended at the center of circle by an arc when arc length becomes equal to the radius of the circle। ठीक है, बेसिकली जब हमने सर्कल ड्रॉ किया था एंड हमने कहा था टाइम t इक्वल्स टू 0 द ऑब्जेक्ट इज एट दिस पोजीशन एंड वी सेट इट डिस्प्लेस टू दिस पोजीशन b, the new position, then the this angle was formed which we said as the angular displacement। so on that तो हमारे पास this is the arc length bp which is s, this is r। उसने as per definition this theta will be called radian if this arc length becomes equals to the radius of the circle। Okay, When the if the arc length this becomes this equal to the this radius of. angle theta will be called radian only if this arc length s become equals to the radius of the circle। Okay. ठीक है, only in that context, and the definition that is given in the marking scheme, normally जो radians की definition marking schemes में given होती है, that would be
एज पर द मार्किंग स्कीम वो बेसिकली वही है, थीटा किसके इक्वल होता था, एस इंटू आर के, एस ओवर आर सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यही था ना, एस ओवर आर, तो उसी बेसिस पे जी। उसको रेडियन को डिफाइन भी करता है कि इट इज द यूनिट। आई विश यहाँ पे कहीं मुझे शॉर्टर फॉर्म में टेक्स्ट का पोर्शन मिल जाए, होता तो है वैसे लेकिन आई थिंक थिन कर सकते हैं साइज से। लेट्स सी टूल्स में है। ओके, नाउ इट वुड बी इजी। So is the unit of angle swept by an arc at the center with radii such that arc length sorry is equal to radius ऑफ द सर्कल। ये तो जो मैंने आपको बताई डेफिनेशन पहले थी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है वो जो द अदर एज पर द मार्किंग स्कीम हम ये भी लिख सकते हैं कि अच्छा, तो ये नहीं लिख सकते हैं, इट इज द यूनिट ऑफ एंगल स्वेप्ट बाय एन आर्क? yes we can, you can choose anything because it's A levels, you do not have to cram anything, तो आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। अच्छा ऐसे। I'm just as I found the text now, so I was rewriting the definition in a neater version. The second definition you could write as it is an angle subtended at the center of circle by an arc length over radius की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। सॉरी, as per this rule। ये आसान है। ये आसान जरूर है अरहम, लेकिन दिस makes the conceptual sense that this theta will be called radian only if the arc length becomes equal to radius of the circle. This is important in other way Yeah, for understanding. for understanding, yes. What is the second part? We have to find out the radius of the circle. Now getting back to this question, हमें जो है अच्छा कल I have given you one assignment. Were you able to do it या full ignore mode on किया उस पे? कर ली थी मैंने। हाँ? Yeah, I did it. 2 pi over t वाला। Okay. How? So you asked why did they say it as 2 pi over t? Hmm. उन्होंने mention किया था because 2 pi over t, for a complete revolution of a circle, the angular displacement is 2 pi. Okay. And the time it took for that whole what do you call it, revolution is capital T. So you just do 2 pi over t for the speed, because
the angular speed or the angular velocity is theta over t, and the theta that was needed for the whole revolution was 2 pi. So it's 2 pi over t. Okay, basically it's okay somehow, but yeah. No, I just want to make it thicker. That's it. I think size में कर सकते हैं. Yes, I Go to the found right. one. Why is the razor so small? Okay. We discussed this formula. और मैंने आपको बताया था one step solution है. Okay? Yeah. We know that K V is equals to S over T होता है. And for S we'll go for 2 pi R for complete revolution. When we write it here, it will become 2 pi R over T equals to R omega. This R will get समझ cancelled गया. with this one. So omega will be equals to 2 pi T. जबरदस्ती की लॉजिक्स हमें नहीं बनानी होती, हमें एक्चुअली प्रूफ करना होता है कि हाउ वी आर गेटिंग टू दिस पार्ट. अच्छा सही है. As मुझे I लगा told you, to कि explain in it. A2 you have to prove so many things. यहाँ पे equations के proofs आएंगे. You have to give the proofs of several equations here. Okay. Okay, getting on to the B part now. उसने हमें find out करने को बोला हुआ है to find out the diameter. And for the data we have moon is approximately 3.8 kilometers from the earth. Estimate the minimum diameter of the circulator on the moon's surface that can be seen using a telescope. So we have been given the value of okay. So we have the value of the radian and the value of radius as well. So we'll go with S is equals to R theta. We have R as 3.8 times 10 raised to power 5 kilometers, and radian we have 9.7 into 10 raised to power minus 6. Do you have the calculator with you right now? Param, do you have the calculator with you? Hello, sir. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. Yeah, okay. Do I have to switch from degrees to radians? No, keep it in radian. Wait, keep it in degrees or do I switch No, no, it? no. Just use the values that are given in the question. No conveyance. Okay. 3.686. 3 point? 686. So do we write 3.7? No. Actually, I forgot to tell you that ये kilometers भी है. So this power will be basically 8. Now see what is the answer coming. Yeah, Sorry, 3,686. we'll stick to that. 3.6 times 10 raised to power 3 meters, which will be equal to 3.6 kilometers. नहीं, वो तो वो दूसरे वाले वो ऑन हुए हैं. ये कहाँ से है? दिखाओ ये कौन सा साइज है. अच्छा. Suggest why crater of the same diameter as calculated in one, but on the surface of the Mars are not visible using the same telescope. Because
टेलीस्कोप बेसिकली हमने अभी की नहीं हुई है, सो व्हेन विल गेट टू दैट विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। बेसिकली जो हमारे पास, इसको हम इन टर्म्स ऑफ सिंपल डाटा यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एस इज इक्वल्स टू आर ऑफ थीटा होता है, ठीक है। डायमीटर उसने क्या हमारे पास कांस्टेंट है, विच डायमीटर हमने इसमें क्या कंसिडर किया था, एस को कंसिडर किया था, विच वाज द डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, ठीक है। सो उसने क्वेश्चन में मेंशन आउट किया हुआ है कि डायमीटर इज सेम, when diameter is same, which means ये constant हो जाएगा, constant is equals to r theta, and constant over theta equals to r. Okay. Yeah. And so for Mars, the radius will be so much bigger, so the angle will be very small. So it will be very difficult to visualize that with the help of the telescope at that point. So when the angle will be very small, हम उसको telescope से visualize ही नहीं कर पाएंगे बिल्कुल. Wait, sir, radius matlab distance from the Earth? Yes, distance from the Earth. Okay, yeah, so it's higher. Yeah, because as per the equation, they have an inverse relationship. So as you keep on increasing r, theta will keep on decreasing. So yeah. एंड जब हम टेलीस्कोप्स की बात करेंगे ना, मैग्निफिकेशंस की बात करेंगे, इमेज ओवर ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन की, व्हेन विल गेट टू दैट पार्ट। सो उसमें हम लोगों को मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा स्मॉलर होगी, सो ऑब्जेक्ट विजुअलाइज ही नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने मे बी बायो में मैग्निफिकेशंस पढ़े भी हुए हो। जी। सो ऑब्वियसली जब मैग्निफिकेशन वेरी स्मॉल होगी, यू विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। Yeah, okay. Okay, then we have another question here. Okay. The solar large ball is made from a part of a hollow sphere. A small spherical ball is placed inside the ball. Blah 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 blah. The force acting on the ball is weights, and you also keep on reading the question. It's not important for me to read the whole question, but it is for you. Okay. Yeah, I read it. So the forces acting on the ball are its weight. Here we have the weight, the tension in the string, the normal reaction force, जो उसमें आ रहा है at an angle theta, and by resolving the reaction force into two perpendicular components. ओके इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ जाएगा हमारे पास। शो दैट द रिजल्टेंट फोर्स एफ acting on the ball is given by the expression W is equals to F tangent theta. सबसे पहले तो हमने इसको मैं एनोटेशन ना ऑन कर लूं, वहां से मेरे लिए इजी होगा टू राइट हियर ऑन दिस वन एज वेल। अच्छा इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, ये, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा ये। आप लोगों ने एएस के अंदर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पढ़े होंगे, सो यू शुड नो कि जो वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा होता है, वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, दैट इज कॉज ऑफ थीटा। और जो 90 का एंगल बना रहा होता है विद द रिजल्ट विद द कंपोनेंट, दैट इज ऑलवेज अ वर्टिकल कंपोनेंट। ये चीट नोट होता है, ठीक है। अब अगर हम इस वेक्टर को यहाँ पे रीड्रॉ कर दें, अच्छा ये यू डू इट एग्जैक्टली लाइक मरियम, like brother like sister. Really? Yeah, and it really irritates me. Most of the time she says instead of giving any answer, she says okay. Matlab, not okay, not even okay, just and you're doing the exact same Yeah, thing. she's annoying. No, I'm trying to say it like I understand, like I'm following you. I know that, I know the meaning behind it. Anyhow, ये vertical and horizontal component clear हो गया? जी. I read you this vector here. Now we have a head to tail rule complete. हेड ऑफ फोर्थ वेक्टर coincide with the tail of second vector and resultant vector draw हो गया, हेड हेड से coincide हो रहा है and tail tail से coincide हो रहा है। okay, Yeah, it's okay. we can say that कि weight and जो vertical component है they are in opposite direction to each other.
Yeah. So they will get subtracted from each other. और वेट एंड ये वाला जो फोर्सेस हैं ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करी होंगे, सो वी कैन राइट इट एज दिस. Wait, can you repeat that? We know that कि when object in a stationary position, so downward force and upward force उसकी क्या होती है, equal होती है. So if weight is acting in the upward direction and इस reaction force का vertical component upward direction में लग रहा है, so this and this will be equal in magnitude. And Yeah. opposite direction में act करने के लिए will subtract these two, और इनका resultant किसके equal है, 0 के. Yeah, okay, fine. So putting the value of RV would be equals to r sine of theta as it's a vertical component. So एक equation ये बन जाएगी. Now we have to go for the horizontal direction. So horizontal direction would be equals to F, which is equals to r cos of theta. Now अगर हम इन दोनों equations को आपस में divide करें, equation 1 and equation 2 को, we will have F, sorry, हमने टेंजेंट बनाना है ना. पता नहीं अब आपने मैथ्स में ये सब पढ़े होंगे, कॉस सो का टैन तो साइन. करना होगा जी. एक एंगल्स रीड किए हैं मैं ना. टेंजेंट इज बेसिकली साइन ओवर कॉस. हाँ, सो का तो आता है. सॉरी. सो का तो do we use that here? No, my other students use some curly brown hairs or anything like that. Some people have curly brown hairs or anything. I think Yeah, so. ये yeah, वही that बनता one. है. हाँ, that one. Okay. We'll divide equation 2 with equation 1, and I'm doing that here. No, I cannot do that here. It's too messy. अच्छा, equation 2 was r sine of theta, and equation 1 was r cos of theta, w over f. R got cancelled. Sine over cos tangent. Tangent theta is equals to W over F. So W is equals to F tangent theta. Hence proof. जो उसने हमें कहा था प्रूफ करने को. ये एक्सप्लेन कर लें, डिवाइड क्यों किया? Cause हमें ये क्वेश्चन प्रूफ करनी थी ना, W is equals to F tangent of theta. उसने हमें कहा था कि इस R को रिजॉल्व करो उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर, एंड देन प्रूफ करो W is equals to F tangent theta. Okay, okay, I understand. So we first split it, resolved the reaction force into its horizontal and vertical component, and usse we got to equation 1 and equation 2. Equation 1 was R is equals to F equals to R cos of theta, and equation 2 was R sine of theta is equals to W. For that, I've explained this part and this part as well. Okay. Yeah, okay. अब जस्ट 2 मार्क्स के लिए हमें इतना सारा काम करना पड़ा. Or obviously उसने कहा state the significance of the force for the motion of the ball in the motion of the ball in the bowl. So this force F is important because it's a centripetal force and it's important for keep the object in the ball. Yeah, it's the force required to keep object moving in a circle, right? Yeah, that's why it's important. This is the significance of this force. Acha, I also wanted to do one equation as well, and I wish Ali was here. उसको भी ये क्वेश्चन समझ आती, but anyhow, okay, I have to stop recording the meeting cause तो वो फिर नेक्स्ट ज्यादा क्लास कर लें. bigger files जो हैं वो फिर send भी नहीं होती हैं.